मेरा नाम जादव पायेंग, मेरा उम्र 56 ट्राइबल कम्युनिटी। I am Jadav Payeng. My age is 56 years and I am a tribal community member from India. मेरा जोरहाट इंडिया का असम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है। I am from India and my state is Assam, which is in the northeastern states of India. Make was the entire forest man of India. People these days, they call me as forest man, not that because I'm staying in a forest. A forest में आप elephant, rhino, deer, हर किस्म के जानवर है। Not that I'm staying in forest, but I created a forest which is of 550 hectares in its area, that is equivalent to 882 football grounds of area. इसके बाद ये शुरू कर दिया 1979 में जब ओवर फ्लड हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, इधर जाबड़ा उजा उसके सब लाग गया, पानी सूख गया, उसके बाद बहुत सांप मर गया। So my forest consists these wildlife. You can just follow them: the elephants, the one-horned rhino, the tigers, the deer, and the wild boar. And this all started in the year 1979, when there was a flood and all the biomass from the higher lands started flooding down to my island. So the flood created massive erosion and took a lot of biomass and livestock onto my island, wherein the water subsided after a few months. उसके बाद ऐसे हुआ, उसका प्यार लगा था, एक दिन तो हम लोग तो ऐसे ही मरेगा। When the water subsided, the condition of land was completely a sandbar. When the summer started coming up in the month of June and July, the hot sandbar started killing the biomass which is coming onto it, including a lot of snakes and other species. So all the dying snakes started thinking about the reason why they are dying. Then I understood it is about the lack of greenery around. That made me to think about starting the plantation initiative. उसके बाद मैं पहले सांप नहीं मरने से पहले बैम्बू रोपा, बैम्बू रोप के उसके बाद 20 पेड़ का पौधा रोपते रोपते और 30 years हो गया, तो हो गया उस जंगल में। The land which was left like a sandbar, initially it was very tough to come up with a sapling plantation because no plant was able to survive there because the condition of land was like this. Then I approached the village elders, who are the tribal community members from Havre. I asked them what has to be done to survive a sapling on this. They suggested me to go and plant bamboo, which is the resilient plant for these kind of harsh conditions. And I started my plantation by introducing this pioneering plant in this particular island. अब वो फॉरेस्ट में तो 115 elephants, rhino, deer और तो हर एक किस्म का फलसार है, अभी तो ग्रीन हो गया। So this particular island with the sandbar, after bamboo I introduced the local species which survived in the shadow of it. Now the same island has come up and gave the shelter to all the wildlife I was talking about. इसके बाद मीडिया ने 2008 में जब तक आया था, उसके बाद एलिफेंट ने तो आदमी सब तो पीपल ने दिया था मुलाई फॉरेस्ट। In the year 2008, forest people started following a batch of elephants and they have reached to my village. And they asked where all these elephants are hiding. Then the villagers told they are hiding in the forest called Mulai forest. Mulai is the pet name of me. The Jadav Payeng is short name. He's referred as Mulai in the village.
So all these the villagers started saying these elephants stay in the Mulai forest. उसके बाद मीडिया टीवी चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया आया है, उर्दू चैनल में लगा दिया था। उसके बाद में पॉपुलर है। धरित्री दिवस ने जवाहरलाल ने यूनिवर्सिटी इन्वाइट करके एनवायरमेंटल साइंटिस्टों ने तो 5 दिन 5 रात गवेषणा करके फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया सम्मान दिया था। After recognizing my efforts by the forest department, the news spread like anything. A lot of media started approaching me, the TV channels and the publications, they started campaigning about me. And in the year 2012, Jawaharlal Nehru University of India gave me the title first time as the Forest Man of India. उसके बाद ऐसे ही हुआ, जवाहरलाल ने इन्वाइट करके जब तब दिया, वो जंगल में मेरा फॉरेस्ट में एक राइनो पुसार हुआ। And in 2012, there was also a rhino which was poached in my forest. So it also indicates there existed some rhinos, and also exists a reality that there are poachers who are looking into my forest as an opportunity to kill the animals and wildlife. वो दिन APJ अब्दुल कलाम सर बॉम्बे में बोल के ले गया था, संडा मुखानंद संगीता सभा। APJ अब्दुल कलाम 60 kg डायमंड सेवर आवेला के पास चेक देकर विश्व से सबसे अच्छा काम करा है। वो कर्ज जानते उत्साही देता है, इसके लिए मैं बहुत खुशी था। वो तो जब तक मेरा साथ चला गया तो कौन देगा तो उपदेश। These are few images of my forest where you can see a lot of greenery around. And this continuation of awards continued. Even the President of India sometime also appreciated my efforts. उसके बाद में आया था तो पेरिस आमंत्रण इवन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पेरिस आया था। पेरिस आके जा तो यहाँ से गया था इंडिया में जाके वो तो सोसाइटी तो देशी विदेशी जब पर्यटक आया था उसको तो जो ज्ञानों में को देता है उसके लिए तो बहुत खुशी था। Lot of people from various parts of the world also started flowing down to my forest. They started visiting this forest and learning from me, and this has created a lot of tourism opportunity for my island and for the people who are staying there. So this became a secondary source of income for all the people who are staying in my village. अभी तो को फॉरेस्ट में सब खाना वाना सब मिलता है। मिसिंग कमिटी क्या है, 3 वस्तु किन के लेता है, मैच केरोसिन और डियास और लवण। If you observe the practice of our community is self-sustainable. They only purchase a matchbox, kerosene and salt from the markets. So everything else they take from the forest, so they have nothing much to pollute or anything. So their lifestyle itself is sustainable in its nature. इसके लिए ये जो है ना उसका खाना वाना सब वो जंगल में मिलता है। इसके लिए बहुत खुशी था जंगल। और वे सुसाय क्या ऑल ओवर वर्ल्ड जब तक हम लोग जिंदे रहेगा तब तक पेड़ नहीं बसाएगा, पेड़ नहीं तो धरती नहीं बसाएगा। इसके लिए मैं सोचा ऑल ओवर वर्ल्ड धरती के बसाने के लिए वो आदिम युग से सब पेड़ ने कपड़ा पहन के सिखाया, पक्षी ने आकाश में उड़ने सिखाया। वो दिन से संरक्षण आज तक ऑल ओवर वर्ल्ड ने नहीं कर पाया। इसके लिए क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज नहीं होने चाहिए कि बहुत कारण है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, नगरी भी ज़्यादा है, उद्योगी भी ज़्यादा है, जांत्रिकता भी ज़्यादा। इसे प्रकृति ने बार बार विश्ववासी को समझा दिया, विश्ववासी देखने से भी नहीं देखा, जानने से नहीं जाना। इसके क्लाइमेट चेंज, इसके लिए एनवायरमेंटल साइंस परिवेश विज्ञान जब तक LP स्कूल में से देगा, एक लड़का एडमिशन देगा 2 पेड़ रुपेगा, 5 साल में प्रैक्टिकली बड़ा करने पड़ेगा। और दूसरा 5 साल में 2 पेड़ रुपया विश्ववासी को देते, तब वर्ल्ड में कितने लड़का एडमिशन देता है साल भर, 5 साल में कितने हुआ, 10 साल में कितना, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रीन हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज से बचा जाएगा। इसके लिए मेरे सुझाव आप लोग जितने ही हैं इधर ये हॉल में बैठा है तो आप लोग तो ऑक्सीजन देने वाला है। ऑक्सीजन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला कोई नहीं है, देने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। उसका 1 मिनट ऑक्सीजन के लिए आप तो उत्साह बंद करो, कैसे होगा? He's saying, stop breathing for 1 minute. Probably that will make you realize
the economics of plantation. You require oxygen. You won't get it in any other manner except the plants. So believe in the plantation and continue the project. The world is now affected because we are doing a lot of deforestation, maybe because of our population increase or industrialization, or maybe we wanted to have some materialistic life. But in the process, we actually need to understand that we are cutting down the essential required plantation that is required for our life itself. So make the earth, have its, let the earth be in the safe position so that we can also enjoy the life here. इसके लिए आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को जो जाएगा आज सब एक एक लोग सब एक एक पेड़ के आपके ऑक्सीजन के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड 700 मिलियन करोड़ जो पीपल है एक एक पर रूमने से भी क्लाइमेट चेंज से बचा जाएगा तब धरती बचाएगा सब आप लोग बातचीत ऑल ओवर वर्ल्ड का में आने जाने चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा धरती चला जाएगा तो आप लोग किसके साथ बातचीत हो ये हॉल क्या किसके लिए दरकार है इसके लिए हमें आप लोग को धन्यवाद हो थैंक यू So I have got 3 plans for you. The plan A is everybody will definitely have one plant of their own so that they can own the right on the oxygen that they are breathing. And plan B, every school admission that is taking place on this earth, probably the student will go with plantation in the first class. He will ensure the plant survives for the next 5 years and he becomes a owner of his oxygen. Subsequently, every citizen in the world, if they are doing it, then there are like 700 billion plants which are going to come up. And I invite a lot of schools and colleges to join me. If they are interested, they can come to my forest. They can learn plantation in my island. There is a new island which is there adjacent to the existing forest. So you can join me and learn there. And you can go back to your respective places and create a green patch everywhere on this globe. And I thank the organizers who gave this opportunity, who have come here. And I'll see my presentation becomes a successful thing only if you go back to your home and come ensure that there is one plantation that you'll do at the end of this day. Thank you.